Good morning students, welcome to Commerce Campus Odisha. Today we'll start with a portion of other type of companies in which we'll discuss about different type of companies and in detail about Section 8 companies. ठीक अछि? Types of companies विषय से बहुत किछि जिंस देछि but actually जो जिंस हम डिस्कस करी आज खाली सेतिया का important. काले हमें देखथिलु ओपीसी कंपनी रा जहां भी लाइसेंसिंग वगैरह की कन्वर्शन वगैरह लिमिट से सब प्रोसेस ता जेति की मु लेखुची सेतिया का पढी की जिबा कुछ दरकार नै. And आज हम डिस्कस करिया टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक अछि? हेडिंग लियो अदर टाइप ऑफ कंपनीज. अदर टाइप ऑफ कंपनीज. Other type of companies. First heading लियो statutory company. Statutory company. Statutory company. Statutory word टा आगुरु तमे सुनथिबो. Statutory माने होची corporate, related to corporate किंबा government माने ଗୋଟେ special जिंस. Statutory provisions वाली word टा तमे सुनथिबो. तो statutory provisions माने कोन? Legal provisions. तो company is something which has legal aspect, but again statutory company रो meaning कोन? देखो companies which are government owned, or government controlled corporations. Government controlled corporations. इजा कोन ना गवर्नमेंट ओन डायरेक्टली जदि गवर्नमेंट ओन करछि किबा डायरेक्टली जदि गवर्नमेंट कंट्रोल करूछि हेले आ गुटे जिंस हम पढिबा गवर्नमेंट कंपनी. आमे सेटा पढला पर देखिबा स्टैट्यूटरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी रा डिफरेंशिएशन कोन. बिकॉज़ मु सब जिंस कांसेप्चुअली जाउछि. गुटे क्वेश्चन तमरा पॉसिबिलिटी अछि कि कंपनी रा टाइप ता आइडेंटिफाई करे. सेटा तमे किमिति आइडेंटिफाई करियो ना को टाइप ऑफ कंपनी किमिति फॉर्म होछि जानले जाय कि आइडेंटिफाई करि पारे. तो फर्स्ट होछि स्टैट्यूटरी कंपनी. ता तळे लेखा independent corporate bodies, independent corporate bodies with specific functions, independent corporate bodies with specific functions, powers, duties and immunities. ता तळे लेखो these companies, एटा सबुठी important point एथिरे. These companies are fully financed by government. Fully financed by government माने कोन? जेतिकी भी तारा एक्सपेंसेस अछि सब जिंस के बियर करछि गवर्नमेंट बियर करूछि. क्लियर? तापर लेखो these companies are accountable to legislature, accountable to legislature established by them. Legislature
established by them. These companies are accountable to the legislature established by them. बुझिला माने होची जदि गवर्नमेंट तुमको पैसा दोची तो गवर्नमेंट कोन तुम अकाउंटेबिलिटी मागियो ना नहीं जदि मनर आमे गोटे पार्टी ऑर्गेनाइज करछु मो तुमको पैसा देली ए जिंस करिया पे तमे आसी कि मते रिपोर्ट करिया ना नहीं कि आमे एतिकी जिंस किनलु एतिकी जिंस पैसा बळका रहला इंदी कहि दिलु तो गोटे जिंस सबळ पे मन रखियो जदि गोटे कंपनी के फाइनेंस करची तो से कंपनी ऑटोमेटिकली ताको कोन हे जिवो अकाउंटेबल हे जिवो क्लियर तो से कोची लेजिस्लेचर वर्ड यूज करची लेजिस्लेचर माने से पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जोड़ा कि से पर्टिकुलर सेक्टर को कौन करछ कंट्रोल करछ किबा फाइनेंस करछ नेक्स्ट पॉइंट लिखो these companies do not require to have do not require to have do not require to have any do not require to have any memorandum of association this was December 2017 RTP question बुझिला आ तमे गुटे जिंस मन रख एमटीपी आरटीपी गुटे एमती जिंस जोडा कि पिला ना कि बराबर देखन दिया गानी एंड सेरा जदी तमे जेतलो कांसेप्ट पढछ सेतलो लिंक करके पढी पारछो तो ताडो भलो जिंस आ किछि नै सब जिंस कवर अप होछ माने बिफोर टीचिंग वी आर गोइंग थ्रू आरटीपी एमटीपी और स्कैनर तीनटे जो जिंस हमें कंपेयर करछ बुझिला आरटीपी आउडे जिंस कोन अछि पिलान को अवेलेबल गुटे थाउची वेबसाइट रे अवेलेबल गुटे थाउची ड्राफ्ट कॉपी के जदी देखिथिबो तो जानिबो there is a draft copy and there is an actual copy which is released तो ड्राफ्ट कॉपी जेतु के देखु नानी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेठारु पचरिबार चांसेस अछि ठीक अछि तो से कोन कहूची क्वेश्चन कोन थिला डैश टाइप ऑफ कंपनीज डू नॉट रिक्वायर टू हैव एनी एमओए एडा केबेले पढ नथियो के को टाइप ऑफ कंपनी ना स्टैट्यूटरी कंपनी को केबे मध्य मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनियार दरकार नै हैला तमे कावेले क्वेश्चन पचर केले कहि परियोनी एडा हेले आमे गोटे जिंस जानलो स्टैट्यूटरी कंपनी रो मीनिंग होची गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी गवर्नमेंट फाइनेंस करची गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कोच तो कंपनी सेक्टर एडर ऑफ माने जहां भी इंटरफेरेंस कोन पे आसिला कंपनी सेक्टर कोन पे आसिला ना कोन पे आसिला रीजन होची गवर्नमेंट तुमको रूल्स एंड रेगुलेशंस सेते जाई कयो जेते जाई से फाइनेंस करची बट स्टैट्यूटरी कंपनी रो ऑब्जेक्टिव जहां भी रहउची से करला आडको ताको बहुत किछि जिंस कोन करिया पड़ची टैकल करिया पड़ची माने रियल लाइफ सिनेरियो रे टैकल करिया पड़ची तो केति कि जिंस ये कहियो केति कि जिंस मिस कर देबो तो सेति कि जिंस गवर्नमेंट ताको कहिनी से सब जिंस से कार्ड को माने इन्फॉर्म कलेक्ट करियो इंफॉर्मेशन दा ना कंपनीज एक्ट कलेक्ट तो खाली गुटे पॉइंट लेखो कंपनीज एक्ट is applicable to such type of companies that are inconsistent with regard to the provisions of the mentioned legislature स्टैट्यूटरी कंपनी रो जेतोळे भी तुमको डेफिनेशन पछारिबो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट काहेंगी एडा बहुत इंप्रेसिव पॉइंट आ बुझला मार्क काटे को तमरो किछि ले ये रहयानी तमे आउडी जिंस मन रखो जेतोळे को लॉ रे आंसर्स लिखुचो यू पीपल मस्ट कंसंट्रेट ऑन द बेस्ट आंसर माने गुटे एमती आंसर लिखियर अछि जोडा कि केले लिखि नथो एमती पॉइंट्स लिखियर अछि जोडा केले लिखि नथो तो से आंसर रो इंपैक्ट आ तमरो सब आंसर्स ऊपर पड़िबो बुझला एंड मोस्टली तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन ता सिमिति जदी लिखि पाछो तो बहुत बढ़िया हे पारे
तो सब ट्राई कर आमे जति पढ़छु सेडा छाड़ी गिरी आ कोन यूनिक पॉइंट्स हमें ऐड करि परिया ठीक अछि तो स्टैट्यूटरी कंपनी विषय रे एति कार किछि डाउट अछि अच्छा मते इमीडिएटली ग्रुप रे कंफर्म करियो जदी कार किछि डाउट अछि एकदम स्लो जाउ छ हमें किछि डाउट अछि तो कहि परियो नो डाउट फाइन तापरे तो तळे लेख गवर्नमेंट कंपनी हेडिंग दियो गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अंडर लेख बिजनेस एंटिटी business entity business entity where business entity where central government business entity where central government or state government central government or state government or both the governments combiningly both the governments combiningly own at least 51% at least 51% of paid up share capital at least 51% of paid up share capital 51% of paid up share capital बुझिला सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली किंबा स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली किंबा दिजन जगह गवर्नमेंट माने 25% 30% की 25% की आउ अधिक कि 30% 30% ही पारिबो सेंट्रल स्टेट मिसै गिरी कि जणे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट 55% होल्ड करि परियो जिमिति भी जदी माने ओन करछने ओन करिया माने कोन कोन कहछ मेंबर नहीं ओन करिया माने जाननो से कोन कहछ देखो 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल माने कोन करछ शेयर किनछ बस शेयर होल्डर होछ बुझिला तो जदी शेयर किन दो चंदी तो शेयर होल्डर मानकर कोन रहबो को राइट रहबो ओनरशिप राइट रहबो तार इंपोर्टेंट होची वोटिंग राइट ओनरशिप राइट माने कोन वोटिंग राइट जदी वोटिंग राइट रखु चंदी तो कोन हबो तांके जहां भी डिसीजन मेकिंग करिए ऑटोमेटिकली सेडा तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तमे कोन ऑब्जर्व करलो मते इंटरैक्शन दरकार तमे निजे आडू भाबो स्टैट्यूटरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी रो बेसिक डिफरेंस कोडी आसीला दीडा जारे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस समस्त कहि पारे हां ओनरशिप टोटल देन नेक्स्ट पॉइंट जहां भी कहि पारे फाइनेंस वेरी गुड गवर्नमेंट एडी फाइनेंस करछि एडी कोन करछि गवर्नमेंट खाली शेयर्स किनुछि माने गवर्नमेंट खाली शेयर्स किनुछि माने आमे जिंदी शेयर्स किनुछु से सिमती शेयर्स किनुछि बट स्टैट्यूटरी कंपनी रे कोन होछि निजे निजे से पूरा फाइनेंस करछि ता ऊपर थर्ड पॉइंट कोन फर्स्ट पॉइंट से कहला ओनरशिप सेकंड पॉइंट होछि कि तमाने कहला कोन शेयर्स किनेको थर्ड पॉइंट होछि सेडी अछि तमे देखो कांसेप्ट बुझले तमे निजे निजे आंसर फ्रेम करि परछो एज इजी एज दैट हाँ ना नहीं गवर्नमेंट कंपनी मध्य स्पेसिफिक फंक्शन पे आगा हबो नो प्रॉब्लम सेडा थर्ड थिंग हो देखो फुल्ली फाइनेंस तळे हम गुटे जिंस लिखलु अकाउंटेबिलिटी देखो से जेतु फुल्ली फाइनेंस करछि तो स्टैट्यूटरी कंपनीज रे अकाउंटेबिलिटी रो कांसेप्ट आसुछि अकाउंटेबिलिटी रो कांसेप्ट बट एडी जेतु तांके शेयर्स किनु चंदी तो अकाउंटेबिलिटी कांसेप्ट आसुनी खाली तांके कोन राइट अछि तारो कहिबा पई तांको कथा सुनबा पई बाध्य बट न सुनले को अदर रीजन लागी जदी चेंज होछि कोन होछि देन कोन अकाउंटेबिलिटी कांसेप्ट सेडी आसुनी
शेयर होल्डर मानकर जिमिति राइट तांकर मते सिमिति राइट बुझिला तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जदि सडनली भी जदि से पचार दोची डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी तो तुम आराम से लिखि बुझिला एबे लेखा स्टैट्यूटरी कंपनी रा एग्जांपल की कहि परियो आरबीआई एसबीआई वेरी गुड एलआईसी आ गवर्नमेंट कंपनी रा एग्जांपल लिखि दियो आरबीआई हाँ एसबीआई LIC ONGC क्वेश्चन आस्थिला तो मु लिखि दोची ONGC आउ एयर इंडिया कॉर्पोरेशन सेबी हाँ आसबो हैला हेतिकी कोन हला स्टैट्यूटरी बॉडी माने होची जोडा कि रूल्स बनेबो बुझिला ना काली हम देखथिलु बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी भितर जहा भी ये अछि बाइफरकेशन स्टैट्यूटरी बॉडी माने होछि सेडा नॉट नेसेसरली अ कंपनी बुझिला ना इट्स एन एजुकेशनल बॉडी हमरा जेति के अछि तो इट्स अ यूनिट जोडा कि से पर्टिकुलर पर्पस में अछि नॉन प्रॉफिट बॉडी जति कोजे तमे तो सेडा कोले काम कर परियो बस सर ऑब्जेक्टिव ता सेडी स्पेसिफाई हे होछि कि दैट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ओटे ये एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेशन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट सब कुछ जरा डिफरेंस अछि स्लाइट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अछि बुझिला गवर्नमेंट कंपनी तळे लेखा also known as public sector undertakings also known as public sector undertakings public sector undertakings also known as public sector undertakings बुझला ए ना तो सुनथबा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ता फीचर्स तळे लेखा फीचर्स तुमको डायरेक्टली 7 मार्क्स क्वेश्चन पचारि परियो सब जा कंपनी को मिसेगी क्वेश्चन फॉर्मेट को धरिके अगेन हम लिखुछु फर्स्ट पॉइंट लेखा इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी सेकंड होची formed under a special act formed under a special companies act देखो एडी गोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें देखु छी दिस एन एक्ट सेडी कोन पूरा एकदम लॉ बुझिला ना डायरेक्टली सेडा गोटे ऑब्जेक्टिव पे होबो डायरेक्टली गोटे बॉडी थिबो गोटे लेजिस्लेचर थिबो बट एडी कोन गोटे एक्ट तापर लेखो ऑडिटेड बाय an agency audited by an agency appointed by के अपॉइंट करियो appointed by गवर्नमेंट very good central government appointed by central government audited by any agency appointed by central government receives its funding last point receives its funding from government shareholding देखो गवर्नमेंट ना कंट्रीब्यूट करछि बट को मेथड रे कंट्रीब्यूट करछि शेयर होल्डिंग रे बट सेडी कोन होछि डायरेक्टली फाइनेंस करछि गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग प्राइवेट शेयर होल्डिंग and capital market एडा होची गवर्नमेंट कंपनी किछि डाउट अछि कार जहां भी अछि पचरी पारियो कंपनी लरे तुम पछु आसी कि पुणी पचरियार टाइम मध्ये रहबनी जहां भी सिली किछि भाबियोनी कोडाले पचरी पारियो
स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी टिके इंपोर्टेंट तापर रजिस्टर्ड कंपनी इज लाइक नॉर्मल कहि पारे तापर लेखो रजिस्टर्ड कंपनी किछि डाउट नै कार देखु छ अच्छी नहीं रजिस्टर्ड कंपनी लेखो एनी कंपनी any company registered under Companies Act or any other previous law is known as registered company बुझी पालो तो सेटा कोन नॉर्मली जो ले कंपनी जदी रजिस्ट्रेशन करथि रजिस्टर होछि अंडर कंपनीज एक्ट और प्रीवियस लॉ तो सेटा रजिस्टर्ड कंपनी तार किछि भी अलगा लाइक गुटे डेफिनेशन अली कहली किछि नाही बट रजिस्टर्ड कंपनी अ कंपनी रजिस्टर्ड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी हमें कहि पारे बुझिना तापर लेखो इट कैन बी incorporated as माने रजिस्टर्ड कंपनी तो किछि नै बेसिक एग्जांपल बेसिक येडा बुझी पाछे मु हैला बट से जदी पचार दो छेडा 4 मार्क्स पई तो तमे कोन लिखिबो एम्ति केसेस अछि एडा फाइनल रे हमर आस्थिला कोन कहले हां लिमिटेड लायबिलिटी गुटे अनलिमिटेड लायबिलिटी गुटे इनकॉर्पोरेटेड एज limited liability and unlimited liability और limited liability अंडर रे कौन कौन आछि limited liability अंडर रे पढ़थिलो हमें ऑलरेडी limited by हाँ limited by guarantee बस limited by shares and limited by guarantee ते कहया दरकार नहीं हमें माने जान जोड़ा limited by shares और limited by guarantee precise information दबा 4 मार्क्स में बुझिला ना तो मेडा के एक्सप्लेन करया दरकार नहीं जदी 7 मार्क्स में पछाती देन एक्सप्लेन करियो नाले खाली इम्तियागा लिखिबो जिंदे चार्ट बनेछि सेमतिया It can be incorporated as limited liability or unlimited liability एली कहले तमे जानचो मेंबर्स जे भी अछि तांकर लायबिलिटी केबे भी सॉरी बनी जनरली एटा को टाइप ऑफ मेंबर्स रो होछि कहिथिली जारो निज कंपनी बुझि पारला तापरे लिमिटेड लायबिलिटी भितरे वी हैव लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी नेक्स्ट पॉइंट लिखो रजिस्टर्ड कंपनी इज एन रजिस्टर्ड कंपनी is an organization formed and registered with appropriate statutory authority of the company माने एटार मीनिंग कोन जानछ ना से कोछि जो एला ऑर्गेनाइजेशन को जदी किछि रेपुटेशन दर
जेमिति कि गोटे इंडिविजुअल को रेपुटेशन केतळ आछि whenever he is having some professional degree किंबा प्रोफेशनल गोटे जॉब अछि किंबा कोन से गोटे भलो पोजीशन रे अछि गोटे तार सर्वाइवल मेथड जहा भी इनकम मेथड अछि सेटा बहुत हाई अछि एमति हेले कोन गोटे इंडिविजुअल रो बहुत रेपुटेशन रहू बट गोटे ऑर्गेनाइजेशन को जदि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी माने स्टैट्यूटरी रेपुटेशन जदि आसीबार अछि तो सेटा कोन हेबार अछि रजिस्टर्ड हेतिबा हेबार अछि रजिस्टर हेतियार अछि बुझि पालो ना नहीं ए प्रोविजन रो मीनिंग होची माने गोटे कंपनी को जदि रेपुटेशन दरकार तो गोटे ऑर्गेनाइजेशन को रेपुटेशन दरकार तो सेटा कोन रजिस्टर्ड कंपनी हेबा दरकार बुझिला देन नेक्स्ट पॉइंट लेखो इट इज लीगली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर it is legally distinct from its owner it is legally distinct from its owner एटा गोटे पॉइंट डेफिनेट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रे आसी परियो लीगली डिस्टिंक्ट पॉइंट इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर्स हमें जानछु इट इज डैश डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर्स हेले काले तुमको मन न पड़ पारे एबे देखले बुझी होची बट डैश डिस्टिंक्ट हेले कहले जानि परियो आमे कोन पढछु सेपरेट लीगल एंटिटी पढछु इट्स ओनर आउ तार जहा भी ये अछि डिफरेंट पढछु बट लीगली डिस्टिंक्ट वर्ड ता पढु लीगली डिस्टिंक्ट वर्ड ता पढे तापर देखो सबडो इंपोर्टेंट पॉइंट all listed companies all listed companies are registered all listed companies are registered but not all registered companies are listed not all registered companies are listed एते जे कार कुछ डाउट अछि कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स जोड़ा भी अच्छी पचरी परियो ओके वॉइस इज क्लियर ओके फाइन थैंक यू वॉइस टा मझे मझे कटुची मु देखुची अलग लेक्चर्स रे कहि पारियो तमान तो जानि पारियोनी तमाने एटलीस्ट इन्फॉर्म करियो कोन प्रॉब्लम होची देखिया रजिस्टर्ड कंपनी बुझला समस्त को एबे लेखो फॉरेन कंपनी एग्जैक्टली मु कहली ना कंपनीज रजिस्टर्ड कैन बी नोन एज रजिस्टर्ड कंपनीज आउ सेटा रजिस्टर्ड ना हेले सेटा कंपनी केम होबो बुझि पारछ ना तो रजिस्टर्ड कंपनी माने होची एक्चुअली कंपनी जोडा की रजिस्ट्रेशन नेगी कंपनी हिच तो आमे से पॉइंट तमे जो पचारलो देखो ए पॉइंट से तमे लिंक करि परिबो गोटे जिंस मु कहली रजिस्टर्ड कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन formed and registered with appropriate statutory authority बुझि पाला ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन टा फॉर्म हला इमति नाही गोटे कंपनी स्टार्ट करिया पे बहुत कॉन्फिडेंस दरकार तांको को लागिया दरकार कि माने जहा भी जिंस होउची हमरा नॉर्मली हेबा कथाले बट प्रॉब्लम कोन होउची ना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हला पर जतोळ तांको लागुची कि हां ठीक ठाक चालियो सेतोळ तांको कोन करिए रजिस्ट्रेशन ने टेंशन नियनि से सब जे पढा बने हला तापर लेखो फॉरेन कंपनी foreign company means a business entity that conducts a business activity in a country other than the one in which it was incorporated
गुटे जगह इनकॉर्पोरेट हेथिया आ गुटे जगह कोन करियो तार बिजनेस एक्टिविटी डा कंडक्ट कर तार बिजनेस एक्टिविटी डा कंडक्ट कर एडा होछ कोन हमर फॉरेन कंपनी तापर लिखो क्लियर एग्जांपल तार इन इंडिया जदि हमें इंडिया पर्सपेक्टिव रु देखुचो सेटा कोन से बेसिक डेफिनेशन कहला माने कोन जदि हमें फॉरेन रे इनकॉर्पोरेट करी इंडिया रे प्लेस ऑफ बिजनेस करछ तो ताबे सेटा कोन हला फॉरेन कंपनी हला जदि सेडी इनकॉर्पोरेट एडी इनकॉर्पोरेट नि सेडी प्लेस ऑफ बिजनेस करछ तो हम फॉरेन कंपनी हला तो जहां भी हे पारिबो बट इंडिया पर्सपेक्टिव रे कोन हबो हमें सेटा देखियो इन इंडिया a foreign company in India a foreign company can be defined as can be defined as a company that सेटा को तुम 3 पार्ट्स करके लेखो इजीली बुझिबो that 3 पॉइंट्स अच्छारो फर्स्ट पॉइंट होची इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से कोन क्लियरली कहि देला इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया is incorporated outside India number 1 plus number 2 कौन has a place of business has a place of business has a place of business in India either physically or electronically or through an agent बुझी पालो एडी और लेखो प्लस नहीं और conducts business in any other manner बुझी पालो फॉरेन कंपनी रो मीनिंग कोन हैला इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बिजनेस था एड रो कॉच तो एडा को कंपनी हैला रे हमरो फॉरेन कंपनी तो हैला जनरली को कंपनी हमें कहू एडा बहुत थोड़े सुनथियो बहुत फ्रीक्वेंटली सुनथियो नाडा कैंपस रे भी बहुत कंपनीज आस्था होचिंदी वेरी गुड मल्टीनेशनल कंपनी बुझी पाछ ना मल्टीनेशनल कंपनी रो काम कोन से कंपनी रे प्रेशर कोन पे अधिक रहउची ना इंडियन मानंगु बहुत किछि जिंस तांके एमती कहि दियंती जोडा कि हम बुझायला पड़ियो काहेकि सेडी जेते सडा इनकॉर्पोरेट नीची तो सेडी रो टैक्स सेडी रो लॉ सब जिंस जानला परे वी कैन कैरी आउट द एक्टिविटीज हैला तो लेखो इट इज आल्सो नोन एज multinational or international companies तो जदि मल्टीनेशनल कंपनीज को डिफाइन करियर पचरे अछि हेली कहले तमे फॉरेन कंपनी रो मीनिंग अगर लिखिया दरकार मल्टीनेशनल कहले फॉरेन कंपनी किबा सबजा नेशन रे थिबा कंपनी इन द पैकेज से लिखि पारियन सेड हला दैट्स व्हाई सबजा रे अदर नेम लिखोछ इंस्टीट्यूट बहुत चालाक मु कहूची से डायरेक्टली पचरियनी गवर्नमेंट कंपनी से पचरे प्लीज डिफाइन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हला जानि पारियनी तमे से जिंस अली कहली छाडी के आसियो हेले आ गुडी जिंस लेखो फॉरेन कंपनी रो पॉइंट जति की जिंस को एग्जाम पर्सपेक्टिव रो इंपोर्टेंट खाली सेति की जिंस दिया होची the winding up of a foreign company
foreign company in India, foreign company in India is limited to the assets assets located in India, assets located in India, asset located in India, assets located in India. हेलो तापर लेख अच्छा तुम ये पॉइंट बुझिल माने फॉरेन कंपनी जदी वाइंड अप हेउछ वाइंड अप माने कोन बंद कर दोछन बंद करके सब जिंस बिकी दोछन तो तुम जानिथिबो वाइंडिंग अप टा सबले को केस रे बेसी हुए जार माने केबे जे सेडा जेतळ कंपनी किछले पैसा दे पारनी किंबा कंपनी रे इमिति पोजीशन पड़ासे जेंति कि बहुत लॉसेस हेयला देबाळे हेयला बुझिला ना तो से केसेस रे कोन करियो सबुडु मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज एसेट्स बिकिबार तो आमर केतिकी ड्यूटी अछि ना जेतिकी एसेट्स आमर इंडिया भितरे लोकेट हेगिरि अछि आमे खाली सेतिकी जिंस रे आगा डील करिबा एंड बाकी सब जिंस हम किछि फरक बट लास्ट पॉइंट इज इंपोर्टेंट द वाइंडिंग अप ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑर्डर as per companies act the winding up order as per companies act as per companies act is mandatory even if even if even if the company has been the company has been the company has been dissolved the company has been dissolved in the country of its incorporation in the country of its incorporation in the country of its incorporation हैला तो आमे गुटे जिंस एडी बुझिबा दरकार कंपनी जेतळ होची फॉरेन कंपनी तो से कंपनी जोडी इनकॉर्पोरेट हेची आ जोडी परफॉर्म करछ दीडा जिंस को से कोन बाइफरकेट कर दोछ केतळ बाइफरकेट कर दोची ना जेतळ हमर वाइंडिंग अप ता होची वाइंडिंग अप ता हैला लोक से दी भाग कर देला फॉरेन कंपनी रे जेतिकी एसेट्स अछि सेडा बिकिबो सेडी वाइंडिंग अप करियो एडी एसेट्स बिकियो एडी वाइंडिंग अप करियो तो सी कहूँ माने केस लो क्वेश्चन हे पारिबो एडा जदी सेडी रो वाइंडिंग अप ऑर्डर ता पळा आसिला जदी सेडी रो वाइंडिंग अप ऑर्डर ता पळा आसी तो गुटे कंपनी को गुटे वाइंडिंग अप ऑर्डर ही जिवो की जदी से पचासी तो तमे कोन कहयो सेडी डिसोल्यूशन भी हे जो बट इंडिया रे वाइंडिंग अप ऑर्डर ता दरकार माने एक पॉइंट ता बुझे पड़ला समस्त मैं एबे गुटे जिंसडी कहूची माने गुटे एग्जाम कथा हम कहूची एग्जामिनर तमे जानि परिबोनी फॉरेन कंपनी जतळ पचाछ तो से केते प्रकार से पचारि पारे आमको जो टेक्स्ट बुक पर्सपेक्टिव रो हम पढुछु तो हम लागियो कि से एतिका के देछि तो एतिकी टाइप्स ऑफ कंपनी पचारि हम टिके टिके गाई पळासी सेट सीमिति नै से गुटे गुटे कंपनी रो कोन कोन प्रोविजन रो केस लॉ करि पारे मो एक्सपेक्ट करछि समस्ते पास्ट क्वेश्चंस टिके ना टिके देखिबो देखिजो समस्ते गुटे देखिनो कोले गुटे क्वेश्चन पेपर रैंडमली देखिजो ना देखिनो ना कोन देखिथियो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तमे देखिबो केस लॉ फॉर्मेट रे अछि बेसिक किछि जिंस नै केस लॉ फॉर्मेट रे थिबो आ मो तो कोछि केस लॉ फॉर्मेट क्वेश्चंस टिके आंसरेबल डेफिनेशन जोटा पचाछ तमे भाबी नथियो आगा इमदी क्वेश्चन पचाछ तो केस लॉ रो क्वेश्चन जतो पचाछ से एते जा आनुछि कोडरो एबे ए गुट्टे पॉइंट अछि हैला से वाइंडिंग अप बिसरे किछि हेले कय तो वाइंडिंग अप रो जेतिक भी पॉइंट्स अछि सब जगह मु पढ़ला परे मते जतो लागी ए गुट्टे पॉइंट हटके अछि बाकी सब जिंस तो ठीक अछि तमे एजा टेक्स्ट बुक रे कोडेले पाइबन तो कोन कहूची सी वाइंडिंग अप ऑर्डर ता गुट्टे कंपनी को गुट्टे वाइंडिंग अप ऑर्डर हे जिवो बट फॉरेन कंपनी केस रे दीडा वाइंडिंग अप ऑर्डर मैंडेटरी गुट्टे होची कोन जो कंपनी रे इनकॉर्पोरेट हेची सेडी आ गुटे कोन जोडी प्लेस ऑफ बिजनेस हेची सेडी आ एसेट्स किन बिकियो सी इंडिया रे एसेट्स रागा हमर लिंक सेड एसेट्स किछि हेले लिंक नै इज इट क्लियर समस्त बुझुची कॉन्सेप्चुअली जाउछु धीरे जाउछु किछि डाउट अछि पचरि पारियो।
बुझिला समस्त किछि डाउट नहीं कार क्लियर नेक्स्ट लेखो सेक्शन 8 कंपनीज सेक्शन 8 कंपनी सरले एडा सरीबो आजर क्लास टा सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी जेतिकी इंपोर्टेंट सेक्शन 8 कंपनी सेतिकी इंपोर्टेंट सेति पे से बहुत किछि पॉइंट्स दे दीची आमे बेसी किछि पॉइंट्स लिखिबानी जेतिकी दरकार सेतिकी लिखिया सेक्शन 8 कंपनीज लेखा these are basically the non-profit organizations. These are basically the non-profit organizations registered under the Companies Act. 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 बुझला तापर लिखो these companies are established with the goal of promoting charitable causes comma education comma science commerce से तीन टा सब्जेक्ट रो ना कहि देछि देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स माने एडी हमरो +2 +3 जिंस नै साइंस माने होछि कोन बहुत प्रकार जिंस बहुत प्रकार मेडिकल फील्ड रे जहां भी एडवांसमेंट्स वगैरह अछि जोडा कि रिसर्च लागि कि बैकअप ही रहि जेछि हला माने नुवा नुवा मेडिसिन्स इन्वेंट करिवार से सब जिंस कॉमर्स माने कोन डिफरेंट ट्रेड मेथड्स केमति हम ट्रेड टा लंबा करी के एस्टैब्लिश करि परिबा रीचेबिलिटी बढ़ी परिया आर्ट्स माने कोन जार जदत माने गोटे स्पेशल फीचर तमर टैलेंट जहा भी स्किल टा जहा भी अछि सेडा केंदी प्रमोट करबे तापरे लेखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सबुजा कॉजेस लिखिबा पे बाउंड हमें कोडा स्किप करि परियानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोशल welfare comma sports social welfare comma sports research and religion स्वागत काले पचारथिलो तमे सेक्शन 8 कंपनीज स्पेशल कॉजेस कोन दीज आर द कॉजेस आमे गोटे जिंस पढ़थिलु ओपीसी कंपनी जहा भी अछि सेडा केबेले कोड आइ पारि सेक्शन 8 कंपनी हे पारि कोन पे हे पारि न जिंस होछि सेक्शन 8 कंपनी जोडा अछि तार स्पेशल कॉजेस प्रमोशन पे अछि गुटे पर्टिकुलर पर्सन केबेले एते जा कॉजेस केबे प्रमोट करि पारे दैट्स व्हाई लॉ का ताको मना करतले कि तो केबेले सेक्शन 8 कंपनी हे पारबो बुझि पाला फर्स्ट पॉइंट लेखो फीचर्स अंडर रे गोटे गोटे पॉइंट रो गोटे गोटे केस ला हे परियो अच्छा तमे भाबुथियो सब जिंस इंपोर्टेंट किंदी तो सब जिंस इंपोर्टेंट किंदी नै इंपोर्टेंट जिंस खाली डिस्कस होछि बुझिला
तो टेक्स्ट बुक रो जदी मु पढी थाने मु कहि थाने एडा काट सेडा काट कहली हैला अधा खंडिया काम आमे करियानी जति की इंपोर्टेंट सेति की पढिया तमो लागुथे सब जिंस कोन पे एते एलाबोरेट होछ ना इंपोर्टेंट जिंस का डिस्कस होछि सेते पे एलाबोरेट होछ क्लियर फर्स्ट पॉइंट लिखो the non-profit objective the non-profit objective the non-profit objective chosen by the non-profit objective chosen by the company chosen by the company must be clearly must be clearly stated in the MOA and AOA तमे चूज करियर अछि ए भितरु जेति कि हमें डिस्कस करलो एडी ए भितरु को पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पई को पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव पई हमें काम करछु पई अच्छा तमे आउडी जिंस एडी मार्क करि परियो व्हाटएवर कॉजेस से माने कहि चंदे सेडा प्रॉफिट पई भी तो हमें काम करि परिया बुझि पाला ना बट नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव रे काम करले जाई सेक्शन 8 रे आसे एति कि जिंस क्लियर रखे हेले हमें चूज करि कि ताको कइदार अछि कि कोन हमें ये करू कोडा रे कहियो एमओए एओए रे मेंशन कर second point profits of the company profits of the company profits of the company are to be used profits of the company are to be used for charitable purpose only for charitable purpose only for charitable purpose only and are not distributed and are not distributed as dividends not distributed as dividends to its members लिखिलो सबो तो जेहेतु प्रॉफिट पे काम करना दी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ने तो कौन डिविडेंड तांके देबेनी तो आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो सेक्शन 8 कंपनी अच्छा गोटे जिंस मते को सेडा तो प्रॉफिट पे काम करनी हैला प्रॉफिट पे काम करनी सेक्शन 8 तो प्रॉफिट पे जदी काम करनी तांको प्रॉफिट कोड रो आसीना एडी डोनेशंस ठीक अछि डोनेशंस जहां भी अछि दे आर लिमिटेड ऑब्वियसली तांकर सर्वाइवल पे तो सेडा ही परिबनी एंड व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव आमे जति की भी डिस्कस करछो एडी देखो डिस्कस जहां भी करछो सेडा कोन कंटीन्यूअसली किछि इन्वेस्टमेंट दरकार ता आमे किछि प्रमोट करछो ट्रेड करछो कि कॉमर्स करछो कि रिसर्च करछो कि जहां भी इट नीड्स सम और द अदर इन्वेस्टमेंट बुझि पारछो ना तो कोड रासछि से मानंगु ना लेखा सेडा इनते हट के क्वेश्चंस आगा से पछरे पर सेक्शन 8 companies can make profits by increasing the number of people in their units एडर मीनिंग मु कहबी providing
providing additional services, providing additional services, providing additional services, investing in various assets, सो अगर तुम जो पॉइंट कहले देखो डोनेशन जहाँ भी आछी हैला हमें सेटा जतरो रीइन्वेस्ट कर दोछ एसेट गुडा अगर रीइन्वेस्ट कर दोछ सेफली हमको पैसा पड़ा आसे ना नहीं रेगुलर इनकम हेवला बुझि पाला ना तो डोनेशंस हमको आछी डोनेशंस रो किछि पोर्शन हमें देखिया किछि पोर्शन देखला परे बाकी पोर्शन कोन करिया रीइन्वेस्ट कर देबा ताकि हम कोन रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम टा आसे इन्वेस्टिंग इन वेरियस एसेट्स investing in various assets such as से कोई देख देखो को टाइप ऑफ एसेट्स स्टॉक्स bonds and real estates stocks bonds and real estates सेक्शन 8 कंपनी लोन दे पारियो ना दे पारियो सेक्शन 8 कंपनी लोन दे पारियो ना दे पारियो किए आंसर कर पारियो आराम से आंसर कर पारियो वैलिड रीजंस दे पारियो अच्छा तमे कोन कहछो दे पारियो को जनरली दे पारियो ठीक अछि तो आंसर ता कोडी ठीक अछि मु कहि दैट्स पार्शियली करेक्ट कोन पे सेटा मेंबर्स को कोन अधा दे पारे ना कोन अधा पार्टी करियो नाही देखो से गुटे पॉइंट क्लियरली मेंशन करछि हमर एक्ट रे लोन रे से मेंबर मानन को दे पारिबन बिकॉज़ दे आर नॉट वर्किंग फॉर इट्स प्रॉफिट दे पारियन अनलेस एंड अंटिल से गुटे माइक्रो फाइनेंस एमसीए अंडर रे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अंडर रे रजिस्टर्ड पेज एंड इट हैज सम लिमिटेशंस डायरेक्टली जो सेक्शन 8 कंपनी सब सेक्शन 8 कंपनी माने भितरे मेंबर मानन को दे पारियन unless and until it has complied with the provisions of code and microfinance under the sector of MCA नुआ amendment आइडा बुझी पाला लेख amendment आछि एडा में आमे एग्जाम देला लगा पड़ा आछिला लेख section 8 company a section 8 company has to be section 8 company has to be registered under the microfinance sector of the MCA website to provide the financial service of loans and credits से माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करि परियो बट मेंबर्स को लोन दे पारियो आगे इंटरेस्ट टाइप इन्वेस्टमेंट टाइप कोचो सेटा बाहर लोक को देले मेंबर्स को देले हबनी ना सेति पय देखो तमे एनालिसिस ठीक कलो डिविडेंड जे तो दोनी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे ने लोन दोनी प्रॉफिट पे ने काई गेली कोले म्यूचुअल बेनिफिट पे जदी ही थाना हमें पढिया निधि कंपनीज विषय हमें पढिबा सेतिर कोन म्यूचुअल बेनिफिट पे से माने काम करंती बुझि पाछ ना म्यूचुअल बेनिफिट पे जतोळे से माने काम करंती तो कोन से माने भितरे जहा भी स्पेंडिंग थ्रिफ्ट सेविंग से सब जिंस पे काम कर सेडर ऑब्जेक्टिव खाली कोन जानछरा मेंबर मानकर बेनिफिट आ कि समस्त टिके पैसा रखिए समस्त जाओ लोन दरकार से माने दे बट एडा कोन जे तो पूरा स्पेशल पर्पस पे हेजी तो डिविडेंड मिलेबोनी लोन दे पारी दीटा पॉइंट मन रखे हैला नेक्स्ट पॉइंट लेखा
तो अक्षर सुंदर तो पेन सुंदर बुझला लेखे इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स कौन है ना कौन सीक्रेट ना कौन पेन टा सुंदर नहीं सॉरी ना ए बाबा केते लिखि दउछि एबे गोटे फील आछे ना मैं पूरा पेन सरे गाणे पाठ पढछे वाह इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स special status Indian government grants special status which exempts special status which exempts them from which exempts them from which exempts them from some requirements which exempts them from some requirements to apply some requirements which applies to other companies से किछि privileges दोचता हैला किछि डाउट अछि कार मु भूली जी पचरी रेने कयर भूली हले बुझिला ओके बाकी जण कोन हैला सोई पड़ला ना कोन देखो लॉ इज बोरिंग छेड़ा किए किछि कर परियोनी बाकी इंटरैक्शन रे से जिनसडा हे परिबो मो द्वारा कोन अछि ना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स फॉर एग्जाम काडी मु देई दोछि सेते तमे इंटरैक्ट करे अछि गाली भी कर पछे कोन कथा आबर स्टार्ट करे जेतला हबो सब क्लास रे समस्त कहे चुप रो सुनो बट लॉ क्लास रे यू नीड टू टॉक among yourselves नहीं with me among yourselves is prohibited under companies act हैला तो I assume हाँ fifth point okay Indian government grants special status which exempts them from requirements which applies to other companies आउट रे कोन मोर तो डिस्कस आगा करनी तो गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनीज को किछि प्रिविलेजेस दोछ कोन पे दोछि ना बिकॉज़ से प्रॉफिट पे काम करनी दे आर हेल्पिंग गवर्नमेंट बुझला इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ताके हेल्प करचंदी तो ताको किछि प्रिविलेजेस दोचंदी कोन प्रिविलेजेस दोचंदी ताको Section 8 companies are under आगे लिखि परियो Section 8 companies are exempt from paying income tax and they also receive several tax benefits. सबुठ इम्पोर्टेंट तो से exempt from paying income tax तापर लिखो Section 8 company has limited liability. Section 8 company has limited liability which means the members are only responsible for the losses covering only up to
the amount of their investment, the amount of their investment. तो कौन है हमर liability limited by कोड है limited by limited liability है limited by बुझी पाला इन्वेस्टमेंट कहि जदि पेड अप शेयर कैपिटल कहि थाना देन कोन हो इन्वेस्टमेंट माने कोन मु कहितली लिमिटेड बाय गारंटी अंडर रे कोन इन्वेस्टमेंट इन कोडा रे करिए हां सेटा तो एक्टिव पैसिव वॉइस चलछि देखो एसेट्स कहितली इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स सेटा भी को थ्रू रे इन मोए थ्रू रे इन्वेस्टमेंट इन एसी assets सोल कहि मैक्सिमम एज जति के अछि एडी सेति के करियो हला आउ बाकी करि परियो एडर गुटे क्वेश्चन थिला इट वाज recommended in important mark करियो को कमिटी रे रेकमेंड हेथिला से क्वेश्चन ता थिला सेटा आपको जो थिले भाभा कमिटी स्पेलिंग देखो भाभा कमिटी ओपीसी रो काली कहिथिले ना कमिटी टा कोइछ तो हां भाभा कमिटी आज्ञा जेजे ईरानी हां वेरी गुड जेजे ईरानी सेटा भाभा कमिटी in the year 1956 in 1956 इंस्टीट्यूट रो किछि फेवरेट क्वेश्चन मॉडल थाउची बुझिला ना सेटा जोडा कि से इंटर एंड फाइनल रे फॉलो करची तो कमिटी गुटे तार फेवरेट क्वेश्चन सेटा सब बुझा कमिटी मन रखे दरकार नहीं ओपीसी जे तो टिके बेसी देइची तो ओपीसी रो कमिटी पचरि परियो सेक्शन 8 रो पचरि परियो सेक्शन 8 कोन पे पचरि हम कहूची काहे गेले तार बहुत हटके टॉपिक्स अछि जोड़ा कि पूरा इनकम टैक्स वाला से एग्जाम्प्ट हे जाउछ तो इट कैन आस्क अबाउट इट ठीक है जल्दी जिया ना कि आपको टैक्स पढ़ने का आबे से टिके पचरता है ओके एग्जांपल कोई परियो सेक्शन 8 कंपनी रो रियल लाइफ एग्जांपल जा भी ट्राई कर परियो तमे जोड़ा भाबुथियो एते जा पढ़ला करो तुम माइंड को कंपनी आसीला हां कोडा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक की मे बी कोन हेतिबो बट बेसिक कंपनीज उटा होचे टाटा फाउंडेशन हमर सेकंड होचे रिलायंस फाउंडेशन बुझिना बेसिक एग्जांपल्स जदि दीडा देबा होछ लिखि दियो टाटा फाउंडेशन आज्ञा हां ईशा फाउंडेशन भी परियो कोन एला हसछो कि मन पड़ेला लुच्ची लुच्ची हसछ त सेते में मजा नहीं रुद्र भाई भाबुथि कि मोएले बड़ हे मोरेले झियो हबो मोएले फाउंडेशन खुली के गोटे इंदि पढ़ा फाउंडेशन बिसरे तमने कोन भाबथियो मोरेले बड़ हे मोरेले पोडी हबो ना दरकार हस्बैंड रो नारे खुलिया भला हबो जदि सासु ससुर नारे खुलिया कहि हम सासु ससुर बीमार ही चंदी फाउंडेशन पे पैसा दियो तांको अंडर रे पळे असडा कोन एडा रोइला हमर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एबे हम अंडरलाइन करियो टेक्स्ट बुक रे द अदर पॉइंट्स एति की फिल्टर आउट करिया पई बहुत टाइम लागे बहुत एफर्ट्स लागे हला तुम कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बस टिके पाठ पढो कंपनी लगो सीरियस नियम केते सीरियस नबो ना जते सीरियस रिलेशनशिप रे फर्स्ट मंथ रे रहु चंदी लोकाने सेते सीरियसली जदी कंपनी एक्ट को तमे नबो लॉ रे एग्जाम्पशन पक्का लिटरली कोच हला 40 पाख लास्ट 2 अटेम्प्ट्स मु देखे मु एवरेज कोमी 40 पाख कोच नेक्स्ट इंपोर्टेंट आउ चारटा यूनिट गोटे दीडा पेज हे गिरी अछि सेडा मो मोस्ट इंपोर्टेंट कवर अप कर
तापर ए जो घटिया चैप्टर को अगेन आम आसिया जोड़ा कि सब गड़ी हांडी दे देछि सेटा वी आर स्टडीइंग फ्रॉम मटेरियल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रो किछि पोर्शन इंपोर्टेंट तार इंपोर्टेंट होछि सेल ऑफ गुड्स जो लास्ट पोर्शन अछि सेटा पचारिबो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो लास्ट टू टिके पड़िबो इंपोर्टेंट तो मु कहिछि अगेन क्रैश रे विल डिस्कस एजेंसी फंक्शन से सब जगह अछि नेगोशिएबल रो को पोर्शन रो आछि सेटा हमें खाली देखिया बिकॉज़ बहुत जिंस एडिशन हिच नुवा टॉपिक बहुत अछि अच्छा देखो काई थिला सेक्शन 8 रो स्टार्ट हबो केतिकी कई खाली सेतिकी अंडरलाइन करके चलो अंडरलाइन करो डू नॉट हैव अ शेयर कैपिटल ऑब्जेक्ट होची चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कोन हला पेंसिल नहीं चैरिटेबल ऑब्जेक्ट हला ए जे सब हम पढ़छु कॉमर्स आर्ट साइंस स्पोर्ट्स रिसर्च सोशल वेलफेयर अदर ऑब्जेक्ट सब जगह अछि से गुटे जिंस कहि देखो ऑलरेडी हम डिस्कस करछु intends to apply its profit if any or other income in promoting its object intends to apply its profit माने तार इंटेंशन भी कोन रहर अछि तार प्रॉफिट वगैरह से जदी इन्वेस्ट भी कर दोछि ना से इन्वेस्टमेंट रो भी जहां भी आसियो तार ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन कोन खाली ऑब्जेक्ट प्रमोशन माने जहां भी कॉज पे से एस्टैब्लिश करने की सेडा प्रमोट करियर prohibits the payment of what dividend allow कौन allow करछि गवर्नमेंट ताकू विदाउट द नेम लिमिटेड किंबा प्राइवेट लिमिटेड ए जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ना लिखिया दरकार नहीं कागु सेक्शन 8 कंपनी कोथिली ना मु बहुत प्रिविलेजेस दोछि गवर्नमेंट तो एडा गोटे प्रिविलेज अच्छा जोड़ा अंडरलाइन करोछ ना तमे से पाखरे आगा लिखि दियो काहे कि आउथरे भितर आसिया जन दरकार टेक्स्ट बुक ता जत्ते पॉसिबल सेते अवॉइड करियो ट्राई करियो जेंदी अदर पॉइंट्स हमें लिखि दोछ एडा अंडरलाइन करो मे बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस रिवोक माने कोन कैंसिल किंबा विथड्रॉ लाइसेंस केबे विथड्रॉ करि परिबो लाइसेंस विथड्रॉ केबे करि परियो इफ कंट्रावेंस माने कोन फॉलो करिवोनी किंबा कोन करियो कोन कहउछन सेडा कंट्रावेंस माने कोन हां आउट रूल कर देबो किंबा वर्ड ता मन पड़े फॉलो करियोनी एग्जैक्टली राको चोड़ेबो जदी गवर्नमेंट को कौन कौन contravenes any of the requirements of this section subject to which a license is issued or the affairs of the company fraudulently conduct hochi in a manner violative of the objectives or prejudicial to public interest or without prejudice to any other action against the company under this act direct the company to convert its status and change its name to add the word limited or private limited as the case may be तो लाइसेंस विथड्रॉ केबे केबे होची लिखि दियो से कोन कहउची कंट्रावेन रिक्वायरमेंट्स सेम जिंस लिखुची मु अलगरे लिखि दियो अफेयर्स कंडक्टेड fraudulently affairs conducted fraudulently violation of objectives माने गुटे ऑब्जेक्टिव मेंशन करछो आउडे ऑब्जेक्टिव करछो माने जिंदे मु कहली सासु ससुर ना रे फाउंडेशन खोल दबो तापर कोन बीमार हे चंदी कोई पैसा मांगी की पार्टी करियो तो कोन करियो गवर्नमेंट कहया धीरे लिमिटेड किंबा प्राइवेट लिमिटेड नाडा ऐड करो कहकरी तांकर स्टेटस ता कैंसिल कर दो आउ किछि एमिति जिंस करलो जिंदगी पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज होला माने सोसाइटी रे किछि डिस्टर्बेंस आसिला तम कंपनी लागे तो एडा होची प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट रो मीनिंग प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट सेक्शन 8 कंपनी रो अदर नेम कोन थिला सेक्शन 25 इन ओल्ड कंपनीज एक्ट a non profit organization केमिति रजिस्टर होची ट्रस्ट डीड किंबा सोसाइटी रजिस्टर ऑफ द सोसाइटी थ्रू रे होची नॉट सो इंपोर्टेंट
एडर आउ गोटे एग्जामिनेशन कौन से कहले देखो ताकू क्वालिफाइड सीएस अपॉइंट करियर दरकार नहीं क्वालिफाइड सीएस इज नॉट क्वालिफाइड सीएस माने अधा क्वालिफाइड सीएस दरकार नहीं सीएस रो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं जनरल मीटिंग जोड़ा 21 डेज नोटिस दबा दरकार सेडी एडी 14 डेज देले भी चलछ 14 डेज देगिरी भी करि परियो इंस्टेड ऑफ 21 डेज मैक्सिमम और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स किछि दरकार नहीं जोडी मो रिक्वायरमेंट्स लिखिली निगी एग्जामिनेशन सेडी सबजा पॉइंट लिखिथियो नोट हैला सबजा पॉइंट लिखिथियो जो एले पॉइंट बुझा पड़ेनी पचारे देखो लाइसेंस टे केंदी अप्लाई करिवो खाली अंडरलाइन करी कि चलो एप्लीकेशन को फॉर्म रे हबो आईएनसी 12 एमओए कोड रे लाइक प्रपोज हबो आईएनसी 13 डिक्लेरेशन एति की सब डॉक्यूमेंट से दबो हला किछि दरकार नहीं इन क्वेश्चन से पचरिबनी खाली जानिबा पई तो जदि गवर्नमेंट को लागी लागी हां ए कंपनी ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे काम करि परियो से कोन करियो लाइसेंस इश्यूड एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जदि को कंपनी को इंटरेस्टेड अच्छी की सेक्शन 8 हेबा पई तो प्रिस्क्राइब फीस ताके पेमेंट करगी दे कैन अप्लाई रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस एडा तमे ऑलरेडी पढ़लो सेम जिनसडा कुआइची मु स्क्रॉल करछि माने तमे देखि के डाउट पचरी पारियो एमति नै कि मु खाली जोडा पढिले सेडा इंपोर्टेंट बट डाउट पचरी पारियो नै कहै अच्छा जदी से कंपनी सॉरी गवर्नमेंट को लागिला कि से जहां भी एक्शन नहीं जहां भी तार अफेयर्स ऑफ द कंपनी अच्छी सेटा ठीक ठाक भाबे चलनी तो से डायरेक्ट कहि परियो ताकू लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऐड करिया पई आउट जिंस कोन करिया अमलगमेट करिया पई भी कहि परि माने आ गुटे कंपनी जोडा कि से प्रिस्क्राइब करियो से कंपनी सहित मिसि जिया मध्ये कहि परि हला एडा गुटे पॉइंट गुटे नो पॉइंट देखो मे बी wound up under this act or amalgamated with another company registered under this section अच्छा सेक्शन 8 कंपनी सहित अमलगमेट ही पारे बुझि पाला तो एडा के प्रिस्क्राइब करियो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करियो कि एमलगमेशन हैला परे ताके केमिति रहिबे केमिति तार पावर्स रहिबो राइट्स इंटरेस्ट अथॉरिटी एंड प्रिविलेजेस किंदी रहिबो कार लायबिलिटी केते कार ड्यूटी केते एजा सब के कहियो सेंट्रल गवर्नमेंट कहियो कि कोन पे जतो सुधार कंपनी ला तू तो हाथ मु सब जिंस दे पारी काहे तू जति बर्बाद हेई अछ बिगड़ा हुआ इंसान तो ताको एले कर दू तो मिसी कोन गाइए जे इंस्टाग्राम रील बुझल रील बने जदि डिफॉल्ट होची तो कोन होबो केति की पेनल्टी पनिशेबल विथ फाइन देखो पेनल्टी पनिशमेंट माने से भी डर इट शैल नॉट बी लेस देन 10 lakhs बट में विच में एक्सटेंड टू 1 crore माने 10 lakhs रो 1 crore तो मिनिमम और मैक्सिमम से कह देला डायरेक्टर्स कोन पनिशेबल 3 years और विथ फाइन और जदि तार बहुत भलो अछि 2000 भी पड़ जे पारे फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट 2000 जदि फ्रॉडुलेंटली होछि तो सेक्शन 447 जोडा कि पेनल प्रोविजन गुडा कथा होछि हमर कंपनीज एक्ट रो सेडा लागू हे जिवो तापर कोचे से कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विथ सच कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड
तो से कौन कहूँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर जनरल मीटिंग रे नोटिस एनेक्स करियार अछि हैला एथरे सब जिंस जगह मेंशन हबो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स रीजंस ऑफ व्हाई द अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी कैरिड आउट सब जिंस मेंशन हेथियार अछि कन्वर्शन ना तमरो ओपीसी केस रे इंपोर्टेंट थिला हैला ओपीसी टू अदर कंपनी टू ओपीसी जहां भी अछि एंड सेक्शन 8 कंपनीज रे एते से पचार रे फिर भी हमें डिस्कस कर देलो ना तमे देखि पारियो देखो प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज टू बी अल्टर्ड माने जदि से गोटे ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देला ताको भल लागुनी तो एबे से कहउछि नै म चेंज कर देबे मते से ऑब्जेक्टिव दरकार नै जिति हमर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज पचार ना दे भल न लागिला आउथरे फाइन मांगी चेंज कर दोचन बाकी कोडर ले किछि पढाउनी सेडा अलग जिंस फिर भी ऑब्जेक्टिव चेंज हे होछि ऑब्जेक्टिव चेंज हेला ना कोन करियो व्हाट आर द प्रिविलेजेस और कंसेशंस करेंटली एंजॉयड बाय द कंपनी tax exemption bond and other immovable properties if acquired by the company say सब जिंस if so market price is prevalent at the time of acquisition माने तमे को बॉन्ड टा किनलो केते मार्केट प्राइस अछि कोन एग्जेम्पशन ले बहुत इररिलेवेंट जिंस जागो किछि भी दरकार नै एग्जाम पर्सपेक्टिव रो details of impact of the proposed conversion members ऊपर कोन impact करिवो हैला members केते एक्रू करचंदी ता लागि से सब जिंस तापर certified true copy of special resolution along with a copy of notice convening the meeting including the explanatory statement shall be filed in the register in form MGT 14 तो एटा कोड अछि आमे जदि मीटिंग कंडक्ट करछ मीटिंग केबे कंडक्ट करू मतलब हम किछि चेंज करैर अछि चेंज कलार जदि किछि मीटिंग कंडक्ट करछु तो रजिस्टर को सेटा को फॉर्म रे कहे MGT 14 अगेन किछि दरकार नै रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म INC 18 रे दबो अच्छा रीजनल डायरेक्टर को देला पर मध्य आरओसी को अगेन दबा पड़ियो line will publish a notice of its own expense at least in one vernacular newspaper and website of the company अकर जहां भी expenses हैला सेडा पिने कहयो से कोन दे दई पैसा send a copy of notice देखो किछि डाउट अच्छेले पचरो एजा सब irrelevant जिंस जागा but we are not skipping anything that's why मैं कहूची किछि भी डाउट थिले पचरे पारो बिट क्वेश्चन रे गोटे दिडा पॉइंट आसी पारिबो तमे जदी पेशेंटली गोटे गोटे जिंस पड़ीगी खाली कोड एनुअल रिटर्न की फाइल हबो कोन फाइल हबो सेडा आसीबो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव जिंस किछि भी दरकार नै जिंदे हम देखिला एक्सपेंसेस पोस्ट करियारो नोटिस दबारो कि मीटिंग हेल्ड करियारो जहा भी कोन डाउट अछि ऑनलाइन स्टूडेंट्स किछि डाउट अछि पचरि पारियो डाउट नै किछि कारण सेक्शन 8 रो पूरा फिल्टर आउट करिके मु कहि देली कार भी जदी किछि डाउट अछि कहि पारियो ओके थैंक यू नो डाउट देखो फाइन देन थैंक यू